Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are exploring a fascinating and often debated topic, which is IPR. Like the full form of IPR is intellectual property rights. So intellectual property rights is one of the major, you know, thing when it comes to any kind of product launch or any kind of new technology discoveries, like anything like that. So it is related to protect the recipe or whatever has been made. So the innovation in biotechnology is protected through patents, through copyrights, and through trademarks. So today we are going to discuss this in detail. So, in the world of biotechnologies, discoveries like new drugs, genetic therapies, modified crops can change lives, right? So something like the discovery of these things definitely needs to be protected and patented at the right time. Now, before proceeding towards the video, I just want to request to you all to please like, comment, share and subscribe to my channel. So in this video, we will understand what IPR means, what is its role in biotechnology, what are the types of protection available, few examples of real case studies, and the ethical debates around it. Okay, so let's get started. Let's understand what IPR is and how it can benefit the biotechnology. So let's start with the basics. So first and foremost is IPR. What is IPR? See, जो legal rights होते हैं जो कि manufacturer को या creator को developer को दिए जाते हैं, उन legal rights को वो लीगल राइट्स बेसिकली कंट्रोल होता है ऑन देयर इन्वेंशन, वॉट एवर दे हैव इन्वेंटेड, उस पे या क्रिएटिविटी जो उनकी है उस पर उनका प्रॉपर पेटेंट होता है, उसी को हम आईपीआर बोलते हैं. बायोटेक्नोलॉजी के अंदर दीज राइट्स आर क्रूशियल क्योंकि ये जो फील्ड है it deals with new forms of life, right? It is a proper researching field. Genetic materials new discover होते हैं, innovative biological processes discover होते हैं. So all of these things or all of these processes, when they are discovered, when they are being discovered, needs to be protected. So डेटा इन्फ्रिंजमेंट कहीं ना हो और दूसरे जो प्लेयर्स हैं वो एज इट इज कॉपी ना कर पाएँ, उसके लिए ये इट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग. So when a scientist develops a new diagnostic tool or discovers a unique microorganisms or engineers a crop resistant to pests, IPR basically ensures that discovery cannot be copied. जो भी invention है उसे copy नहीं किया जा सकता है and बिना permission के use नहीं किया जा सकता है. That is all IPR is all about. Now इसके वजह से the benefit is it encourages the innovation, right? Inventors जो हैं they want to do better and better in this field because of this IPR thing possible in biotechnology. Now moving forward to why IPR matters in biotechnology. Like, okay, we know that it is a protection right, okay, but then why does it matter so much? It matters a lot. Why does it matter so much? See, बायोटेक्नोलॉजी की जो रिसर्च है it involves massively around investment, time और money, दोनों चीज़ों का. Now, एक न्यू वैक्सीन डेवलप करना, it takes many years to develop a new vaccine. First of all, many failed trials, many failed attempts to develop a proper vaccine that can be used by people. Now, या फिर genetically modified crop develop की किसी भी चीज़ को when you are developing a product in biotechnology, it takes a lot of time, a lot of years to be very honest, and a lot of money as well. It costs millions of dollars. Now, IPR के बिना, अगर IPR ना हो तो दूसरे companies जो हैं they could easily copy the innovation immediately. So original inventors ने जो खर्चा किया है, जो टाइम इन्वेस्ट किया है, उनको उनका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा. इन्वेंशंस प्रोटेक्ट करने की वजह से आईपीआर फंडिंग अट्रैक्ट करता है, फंडिंग को इंश्योर करता है.
researchers interest लेते हैं, they are keenly interested in doing their research and inventing something which can be of use for the entire population, and एक healthy competition कहीं ना कहीं चलता है. So IPR is very crucial. अभी जैसे हम COVID-19 वैक्सीन की बात करते हैं, अगर पेटेंट्स नहीं होते तो कोई भी वैक्सीन का जो था कि इस तरीके से वो जो मेथडोलॉजी थी, जो मैकेनिज्म था, उसका डेवलपिंग मैकेनिज्म था, वो कोई भी कॉपी कर लेता, विच is inhibited by IPR. So that's what the importance of IPR is, and that's why it matters so much. Now, types of intellectual property rights. There are several types, of intellectual property rights. What are they? So first is patents. Patents क्या होता है, जो न्यू इन्वेंशन होती है, जैसे कि न्यू नोवेल जीन एडिटिंग टूल हो गया या बायो इंजीनियर्ड एंजाइम हो गई, तो उस न्यू इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करने का काम पेटेंट्स का होता है. नाउ व्हाट डू ट्रेडमार्क्स डू? ट्रेडमार्क्स जो होते हैं ब्रांड आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि कंपनी वेबसाइट हो गई, कंपनी की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना, लोगोज को प्रोटेक्ट करना. फॉर एग्जाम्पल बियो हैज़ अ लोगो ऑफ इट्स ओन, फाइजर हैज़ अ लोगो ऑफ इट्स ओन. सो वो लोगोज, वो कंपनी वेबसाइट एंड एवरीथिंग वॉट एवर दे हैव प्रेजेंटेड ऑन देयर वेबसाइट, वो सबको प्रोटेक्ट करने का काम is done by trademarks. Now copyrights जो होते हैं, ये कुछ अगर लिखा है, कुछ आर्टिस्टिक है या डिजिटल वर्क है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम, जो भी रिटन एंड क्रिएटिव कंटेंट है बेसिकली उसको, जैसे कोई रिसर्च पेपर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, वहाँ पे प्रोटेक्शन जो है वो कॉपीराइट करता है. ट्रेड सीक्रेट्स जो हैं, जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होता है, जैसे कोका कोला फॉर्मूला हो गया या प्रोप्रिएटरी सेल कल्चर मीडिया रेसिपीज हो गई, जो कि बायोटेक कंपनीज वो करती हैं, उसको प्रोटेक्ट करने का जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, विच कैन नॉट बी शेयर्ड विद एनी अदर कंपनी और पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, उसको प्रोटेक्ट करने का काम ट्रेड सीक्रेट्स करते हैं. So each of these plays a unique role in protecting innovation. Now, what is patents in biotechnology? सी आईपीआर के सारे फॉर्म में जितने भी मैंने अभी बताया आपको पीछे, पेटेंट्स जो है सबसे पावरफुल है बायोटेक्नोलॉजी में. पेटेंट्स जो है वो इन्वेंटर यानी कि जो मैन्युफैक्चरर है उसको 20 इयर्स के एक्सक्लूसिव राइट्स देता है कि वो उसको प्रोडक्ट को जो भी उसने इन्वेंट किया उसे बना सकता है, उसे यूज़ कर सकता है, उसे सेल कर सकता है फॉर अबाउट 20 ईयर्स, राइट. ये प्रोटेक्शन जो है दूसरों को वो इन्वेंशन यूज़ करने नहीं देता है. पेटेंटेड बायोटेक प्रोडक्ट्स के कुछ एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ तो, जैसे रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन इंसुलिन विच इज़ डेवलप्ड यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, बीटी कॉटन फॉर एग्जाम्पल, इट्स वेरी कॉमन. डायग्नोस्टिक किट्स हो गए HIV के लिए, COVID-19 के लिए. सो पेटेंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट को सिक्योर करते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरर एंड नॉलेज शेयरिंग को प्रमोट करते हैं डेफिनेटली, बिकॉज पेटेंट एप्लीकेशंस पब्लिकली अवेलेबल होती है, पीपल कैन रीड एंड गेन नॉलेज आउट ऑफ इट, बट दे कैन नॉट डेफिनेटली यूज द सेम थिंग विदाउट द परमिशन. सो इट स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द न्यू टेक्नोलॉजीज ऑल्सो. Now, what can be patented? This is one of the most important questions. What can be patented and what cannot be patented? So, biotechnology के अंदर patents जो हैं बहुत wide range of innovations को cover करते हैं. It covers literally everything in biotechnology. But की रूल ये होता है कि इन्वेंशन जो है वो न्यू होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं कि पुराना ही कोई इन्वेंशन आप उठा के और आप उसे पेटेंट कर. नो, इट शुड बी न्यू, एंटायरली न्यू. यूजफुल होना चाहिए, not anything can be patented. If it is useful, if it is seeming useful, if it is if it has the potential, in the future for future therapies, or for any use in the future, if it has potential, then only it is going to be a great deal. And non obvious hona chahiye, like it should not be very simple thing which.
सो दीज आर सम ऑफ द क्राइटेरियाज. नाउ जैसे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं, जीएमओज, जो हम आजकल इतने सुनते हैं. अभी पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स या बैक्टीरिया जो कि बायोफ्यूल्स बना सकते हैं, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट इनोवेशंस इन बायोटेक्नोलॉजी. सो समथिंग लाइक दैट कैन बी पेटेंटेड. डीएनए और प्रोटीन सीक्वेंसेस आइसोलेटेड, जो आइसोलेट करने की जो टेक्निक्स हैं उसके इंडस्ट्रियल और मेडिकल एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, दैट इज द वन यूजफुल टेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस जैसे कि फर्मेंटेशन टेक्निक हो गई, यू नो, if there is anything which can advance the fermentation technique, that can be useful. gene editing method में कुछ नया है तो that can be useful. जैसे कि अभी CRISPR Cas9 आया है, so CRISPR was already there, but then the advancement in the technique which is already here, which is already being used in the market, उसमें अगर कुछ advancement हो सकता है, जैसे next generation sequencing आई, तो कहीं ना कहीं ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी या डिवाइसेस में, ड्रग्स में, थेरेपीज में कुछ किसी तरीके का कुछ एडवांसमेंट कैन बी ऑफ एनी यूज. ठीक है. फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जैसे कि मैंने आपको बताया, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हो गए, इनके अंदर अगर कुछ innovation है. So however, inventors must always provide detailed documentation and evidence because that is required. जो भी उनके इन्वेंशन में डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस यूज हुए वो उन्हें डेफिनेटली सबमिट करना होता है to the department. Now, what cannot be patented? We have learned what can be patented. Now we will learn what cannot be patented. See, there are definitely certain boundaries. So you cannot patent things that already exist in nature, like which are nature driven or which are present in nature. You cannot patent that because that is already present, such as a gene that already exists in the human body. You cannot patent that because that is present in the human body already. Similarly, कोई भी abstract ideas है, scientific theories है या natural phenomena है, उसको आप patent नहीं कर सकते because you cannot patent, you know, things which are already present in the nature. एथिकल लिमिटेशंस भी हैं पेटेंट राइट्स पे, जैसे कि ह्यूमन क्लोनिंग है या जेनेटिकली मॉडिफाइंग ह्यूमन एम्ब्रियोज है, ये सब अलाउड नहीं है इन मैनी कंट्रीज. मोस्ट कंट्रीज डू नॉट अलाउ ह्यूमन क्लोनिंग एंड एवरीथिंग लाइक दैट बिकॉज डेफिनेटली एथिकल कंसिडरेशंस हैं उसके लिए, सो वो चीज़ अलाउ नहीं है. दिस इंश्योर्स दैट आईपीआर डज नॉट क्रॉस moral boundaries while still promoting innovation. Okay. Now, moving forward to steps in obtaining a biotech patent. So, for example, if you want to obtain a biotech patent, you have discovered a thing, you have invented a thing, and now you want to obtain a patent. So, what are the steps, to do that? So first and foremost is research and documentation. आप properly उस चीज़ को research करोगे, आपको properly describe करना पड़ेगा that what's new about your invention, like what is there, what is so special about your invention, what is so non-obvious about your invention, what is so new about your invention, how it can benefit future generations or future technology, the future drugs or therapies or patients or anything like that, how it can benefit in the longer run. After that, patent search, check if similar application of patent already exists by some other manufacturer or creator. पहले से ही ऐसा कोई patent application है क्या? Then comes application filing. So, एप्लीकेशन फाइलिंग में डिटेल्स सबमिट करने होते हैं डॉक्यूमेंटेशन के, साइंटिफिक डेटा, जो भी नेशनल इंटरनेशनल पेटेंट ऑफिस में वो सारे डेटा आपको सबमिट करने पड़ते हैं. नाउ एग्जामिनेशन प्रोसेस, पेटेंट डेफिनेटली रिव्यूज व्हाट इज द नोवेल्टी, यूटिलिटी, व्हाट आर द एथिक्स ऑफ योर इन्वेंशन. आफ्टर दैट इज डन, उसके बाद आपका पेटेंट अप्रूव होता है. तो वंस इट इज अप्रूव्ड, इन्वेंटर होल्ड्स राइट फॉर अराउंड 20 years, लेकिन उसे मेंटेनेंस फीस देनी पड़ती है पेटेंट मिलने के बाद भी. सो ये जो प्रोसेस है इट इज़ डेफिनेटली लेंदी, लेकिन फेयर प्रोटेक्शन एंड ग्लोबल रिकग्निशन के लिए इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, राइट. नाउ मेजर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स. सो बायोटेक्नोलॉजी ग्लोबल फील्ड है, इट इज़ नॉट रेस्ट्रिक्टेड अप टू वन कंट्री और नेशन.
सो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स डेफिनेटली इसेंशियल हैं, जैसे कि ट्रिप्स एग्रीमेंट होता है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ट्रिप्स एग्रीमेंट में क्या होता है, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स सेट करता है फॉर पेटेंट प्रोटेक्शन अंडर द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जब आप वहाँ पर अपनी एप्लीकेशन फाइल करते हो अंडर ट्रिप्स एग्रीमेंट, तो वो ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट करता है फॉर योर एप्लीकेशन। पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी, so Patent Cooperation Treaty is PCT. It allows inventors to apply for patents in multiple countries with one international application. आप एक इंटरनेशनल एप्लीकेशन से मल्टीपल कंट्रीज में पेटेंट फाइल कर सकते हो इस ट्रीटी के थ्रू। देन कम्स द बुडापेस्ट ट्रीटी। सो बुडापेस्ट ट्रीटी फैसिलिटेट करती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की पेटेंटिंग, by standardizing how they are deposited in recognizing or in recognized culture collections. So ये जो agreements हैं, it makes it easier for scientists to protect their inventions across borders. If you want to, expand your reach in the international part of it, so you can definitely do that. Now, IPR laws and regulations in India. Since we are living in India, we need to understand what are the IPR rules and regulations. See, पेटेंट एक्ट जो बना था इट वाज बैक इन 1970, जब वो अमेंडमेंट हुआ था। अमेंडमेंट एक्चुअली 2005 में हुआ और 1970 में द रूल started and got established in 2005. सो पेटेंट्स एक्ट जो था वहाँ पर ग्लोबल पेटेंट लॉज के अंदर इंडिया ने एक स्टेप फॉरवर्ड किया था। देन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में बना, जिसमें फेयर बेनिफिट शेयर किया, लाइक फेयर बेनिफिट राइट टू ईच एंड एवरीवन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को यूज करने के लिए। देन प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट 2001 में। सो प्लांट ब्रीडर्स और फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट था। सो ये सारे लॉज जो हैं दे प्रोटेक्ट innovation while ensuring that India's biodiversity and traditional knowledge are not exploited by foreign companies. Okay. Now, moving forward to here are some of the famous examples of patent biotechnology patent. So Monsanto's BT cotton plant, we all know. Bacillus thuringiensis. So Monsanto ने genetically modified cotton resistant plant बनाया था जो कि पेस्ट से रेजिस्टेंट था। इसकी वजह से यील्ड बढ़ी, बट इट स्पार्क्ड द डिबेट्स ऑन पेटेंट फीस एंड फार्मर्स राइट्स इन इंडिया, राइट। देन मायरियाड जेनेटिक्स केस, ये यूएस कंपनी ने 2 जीन्स को पेटेंट किया था विच आर लिंक्ड टू ब्रेस्ट कैंसर। सुप्रीम कोर्ट ने लेटर देखा कि वो नेचुरली अकरिंग जीन्स हैं और पेटेंट नहीं कर सकते हैं। सो वहाँ पे ग्लोबल पेटेंट लॉ कहीं ना कहीं उसकी शेपिंग हुई थी। कोविड-19 वैक्सीन पेटेंट्स, पेंडेमिक के टाइम पर वैक्सीन पेटेंट्स डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हुए हैं एंड उसकी वजह से इक्विटेबल एक्सेस, बिकॉज सी I'll specifically talk about pandemic. So in pandemic, if one person discovers or invents any kind of vaccine or drug that can be used in the treatment for a particular disease, right? That is causing pandemic. Now, अगर उसका पेटेंट बन जाता है तो इक्विटेबल एक्सेस कहीं ना कहीं रुक जाता है, because what if other creators or manufacturers are not able to crack the deal or crack the code, so what's then? So वो कहीं ना कहीं इक्विटेबल एक्सेस को रोकता है, that's one. So वो कहीं IPR definitely sparks the controversy as well, but then it is important also. Now, what are the ethical and social issues? See, biotechnology touches life itself, right? So ethics is definitely always at the center. जैसे कि क्वेश्चन अराइज होते हैं कि जो लाइफ फॉर्म्स हैं, प्लांट्स हुए, एनिमल्स हुए, जीन्स हुए, ये किसी ने ओन करना चाहिए, लाइक शुड दीज थिंग्स और शुड दीज लाइफ फॉर्म्स बी पेटेंटेड। सेकेंड इज
जो लाइफ सेविंग मेडिसिन हो रही हैं वो अफोर्डेबल हैं हर किसी के लिए, बिकॉज वंस द पेटेंट इज अप्रूव्ड फॉर 20 years, देन दैट मैन्युफैक्चरर इज गोइंग टू सेल दैट पर्टिकुलर ड्रग एट एनी कॉस्ट, whichever cost he wants, right? Because there are no other alternatives for that particular, like there are no generics for that particular product in the market. So वो affordability ensure करता है? Definitely not. So there is also the concern that patents could restrict scientific sharing, slowing global progress. Definitely, because 20 years के लिए you do not know the exact thing about the technology. So hence policymakers constantly seek a balance between protecting innovation and ensuring public welfare. What are the challenges in biotechnology IPR? See, despite its importance, IPR in biotechnology faces definitely major challenges. Cost बहुत ज़्यादा है filing का, maintaining patents इसका cost बहुत ज़्यादा होता है. अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग लॉज, वेरीड लॉज होने की वजह से it caused few challenges for the manufacturers. Difficulty in enforcing rights. डेवलपिंग रीजन के अंदर इतना जल्दी अप्रूवल मिलना या इतना पेटेंट अप्रूवल मिलना या इतना जल्दी पेटेंट फाइल हो जाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है बिकॉज ऑफ अगेन वेरीड लॉस. देन देर आर एथिकल एंड कल्चरल कंसर्न्स जेनेटिक मैनिपुलेशन को लेके स्पेसिफिकली. So these challenges show that the IPR system must evolve alongside science to stay fair and effective. Now, future of IPR in biotechnology. Future definitely looks promising, exciting, yet complex. AI जो है यूज़ किए जाने लग गया है आइडेंटिफाई करने में या ड्राफ्ट करने में पेटेंट एप्लीकेशंस को. हम ओपन सोर्स बायोटेक्नोलॉजी भी देख रहे हैं जहाँ पर रिसर्चर्स जो हैं डेटा शेयर करते हैं प्रोग्रेस बढ़ाने के लिए, रिसर्च बढ़ाने के लिए, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ वैक्सीन्स एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी. सेम टाइम पे ग्लोबल कॉपरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है एथिकल एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स को डील करने के लिए, केटर करने के लिए. So in the coming decades, I must say that we will see IPR systems that are more transparent, that are more digital and globally unified. Okay. So to conclude, IPR definitely forms the backbone of biotechnology innovations. इसकी वजह से इन्वेंटर्स को रिकग्निशन मिलती है, इन्वेस्टमेंट हो जाता है, न्यू टेक्नोलॉजी सोसाइटी तक पहुंच पाती है. बट IPR is not just restricted to the ownership. It is about responsibility. We must definitely use these rights wisely to promote both progress and equality. So as biotechnology continues to advance, from gene editing to synthetic biology, strong, fair and ethical IPR systems must be there to shape a better future for everyone. So yeah, that's about it. So thank you so much for watching. Please do like, comment, share and subscribe to my channel. And if you want any particular questions, do let me know below in the comment section. If you have any particular topic of your choice to be explained by me, please do let me know below in the comment section. We will meet in the next video. Thank you so much. Bye bye. Take care.